Good morning everyone, how are you? My name is Ahmad Mujtaba. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे. लास्ट रोज़े जो है वो आप लोगों के बहुत अच्छे जा रहे होंगे. एंड दिस इज़ द ईद लुक जो कि मुझे बहुत अरसा पहले फिल्म करनी थी, लेकिन इतने सारे काम थे. और वैसे भी रोज़े के साथ जब आखिरी के रोज़े आते हैं तब आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फटीग होने लग जाती है. सो इस वजह से आई कुडंट फिल्म एनीथिंग, बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू फिल्म दिस ईद मेकअप लुक विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी dewy and very beautiful kind of peachy look. And yeah, this is going to be amazing for you guys. So you can achieve this look by watching this video till the end. And if you haven't subscribed my channel yet, please go and hit subscribe. और साथ में जो है वो घंटी ज़रूर बजाइएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. So how I'm just going to achieve this look, I'm just going to share the full on tutorial with you guys. So let's dive into the video. So there is like literally nothing onto my face, and yeah, I'm just going to prime my face with Rivaj UK Mousse primer. And as you guys know that this is my favorite, so let me prime my face. So after priming up the face, I'm just going to prime my lips as well, क्योंकि रोज़े रख के जो है वो आपको पता है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं. हमारे पास एक बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है इसमें हम लोग पानी पी सकते हैं, और अक्सर लोग पानी पीते तो खाना कम खाते हैं, तो ये एक चीज़ जो है वो सिलसिला चलता रहता है. सो वी टेंड टू गेट रियली वेरी डिहाइड्रेटेड और हमारे लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्राइम माई लिप्स विद माई फेवरेट, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ. दिस इज़ बाय निविया लुबेलो रोज़ जो है वो चैपस्टिक. आई एम जस्ट going to prime my lips with that ताकि जब तक मेकअप कंप्लीट हो ये अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाए. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गो फॉर द फाउंडेशन, एंड दिस फाउंडेशन इज़ लाइक अ रियली ट्रिकी फाउंडेशन. I'm just going to use this one. This is the Glam Girl Studio Finish Foundation, and if you have watched the first impression video of this foundation, I kind of have a love and hate kind of relationship with this foundation. It is tricky to apply, and this is specifically for oily and combination skin. Dry skin people, I don't think so can handle this one. So this is like tricky to apply, but the beautiful thing, like जब मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा इसको यूज़ किया. So the best thing is कि it stays for long onto your face and it keeps you matte, which is a very good thing because I have a combination skin. So it is a little tricky to apply. I'm just going to use this one with my beauty blender because last time जब मैंने आपको brush के साथ रिव्यू दिया था तो it was very full coverage, but with this one it was sheer. So I need to go and have a sheer one. This is a little lighter than my skin tone, but I am just going to make it work. So first of all, I'm just going to shake the foundation, and I'm just going to take one pump of this foundation here. So for this tutorial I'm not going to achieve a very full coverage look because I want it to look minimal yet trendy yet good. So that's what I'm just going to do. और ये एक pump में से भी almost half pump जो है वो भी मेरे पास बच गया. So as I've told you guys in the beginning of the video कि आज हम लोग glowy base करेंगे, लेकिन this foundation is matte. So today I'm just going to give you guys a trick जो मैं use करता हूँ mostly in my professional makeup, and it gives such an amazing result, and I'm just going to share this with you guys. आपकी चाहे foundation matte है चाहे आपकी foundation dewy है, you can use whatever foundation you have. I'm just using this one because it's matte and it stays very long onto my face, so that's why I chose this one. So I'm just going to highlight my under eyes using this Sweet Touch magic concealer, and this is in the shade Ivory 30, and I'm just going to take this product a little onto my finger because this is a cream product, and you know that I love to use cream products with my finger because they melt the products. So my concealer is done, as you can see, and now I'm just going to do my cream contouring. As you guys know that I love cream contour, so I'm just going to use this Crystalline contouring shade, and I'm just going to take it on my brush just like that. It's too much, so I'm just going to apply it onto the contouring points of my face. So now I have applied the highlight and I contoured my face. Now this is the time for me to go into the trick that I was talking about, and the trick is to use highlighter. So I'm just going to apply the highlight on my face, and I'm just going to take it on my brush just like that. It's too much, so I'm just going to apply it onto the contouring points of my face. So now I've applied the highlight and I contoured my face. Now this is the time for me to go into the trick that I was talking about, and the trick is to use
than the setting powder. So this is a trick that I learned and I kind of practiced and it gives such an amazing result. कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपने फेस के ऊपर शाइनर या हाइलाइटर जो है वो एंड पे लगाते हो तो वो टॉप पे रहता है, आपके फेस की जो है वो सरफेस के ऊपर रहता है और काफ़ी स्किन के अंदर से एक जो रेडियंस निकलती है वो चीज़ नहीं आपको लगती. सो दिस इज़ द ट्रिक विच आई यूज़ कि बिफोर सेटिंग द थिंग्स, बिफोर बेकिंग एनी थिंग, आई जस्ट गो एंड आई यूज़ the highlighter. So this is a highlighter palette जिसके अंदर बहुत सारे shade है. So I'm just going to use some peachy stuff. I'm just going to use these two shades here and maybe a little bit of brown. I'm just going to pick up onto my powder brush and I'm just going to apply it onto my face to set my foundation basically. Can you see? Instantly I got the shine onto my face. Same onto the other side. Can you see this shine, this radiance that I was looking for? I'm just going to set my face with this one. Oh my god, this looks beautiful. I want to give you one more tip कि अगर आप लोगों की जो फाउंडेशन है that is already dewy, तो आप इसको जो है वो थोड़ा होला हाथ रख के जो है वो उसको यूज़ करें. आप बहुत कम सा जो है वो अपना हाईलाइटर जो है उसको अपने ब्रश के ऊपर लेके जो है उसको अपने फेस के ऊपर swirl कर सकते हैं. बट my foundation was matte and this is the look that I got using this trick. I don't think so पहले कभी किसी ने YouTube के ऊपर ये trick आपको बताया होगा कि use highlighter before the setting powder. So I am just going to use this Glamorous Face का twin cake in the shade 01 and now I am just going to first of all set my under eyes with this ताकि मेरा कंसीलर जो है वो बिल्कुल भी क्रीज ना करें. डोंट टेक द हाइलाइटर टू मच ऑन टू द अंडर आई एरिया बिकॉज वहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है. इट शुड बी अ लिटिल मैट. एंड नाउ टू द एरियाज जहाँ पे मेरी फाइन लाइन्स हैं, टू माई नोज, टू माई टी जोन एरिया विच गेट्स लिटिल ऑयली. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द पाउडर विद द स्पंज एंड आई एम जस्ट गोइंग टू press it into the skin. Now with this trick अगर आपके पास जो है वो आपका हाइलाइटर आपसे थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है when you will apply the powder afterwards, तो वो काफ़ी इस चीज़ को जो है वो कवर अप कर लेगा. Now you can see I'm just going to take the same brush जिसके ऊपर हाइलाइटर ऑलरेडी है, तो I'm just going to take my powder with it and I'm just going to apply this one. So you don't have to worry कि आपकी जो फाउंडेशन है वो या आपका फेस बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि जैसे पेंट लगाया होता है शाइनर या समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आप जब इसके ऊपर जो अपना पाउडर लगाएंगे इट विल गिव यू गाइज अ वेरी ब्यूटिफुल रेडियंस इन टू योर स्किन. इट विल नॉट लुक कि जैसे आप बाद में हाईलाइटर लगाते हो तो वो सरफेस के ऊपर लगता है. इट वोंट लुक लाइक दैट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बेसिकली सेट माई होल फेस विद दिस वन. And this is going to be a perfect base for this Eid. So after that I'm just going to retouch my contour because हमने highlighter लगाया, हमने powder लगाया, so it will fade away. So I'm just going to retouch my contour. I'm just using Christine's contouring kit, which is this one, and I'm just going to retouch my contour. So this is the base done and as you can see it is so glowy, it is so beautiful and this is amazing. This is the first time onto the YouTube I'm sharing this tip which is very effective in having this amazing glowy foundation. बहुत सारे लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि अहमद भाई प्लीज़ जो एक glowy foundation वो आप सिखा दें. This is my trick how to achieve a very beautiful glowy radiant skin kind of foundation and you can see it is looking so natural. It is not like कि मैंने बहुत ढेर सारा जो है वो शाइनर लगाया हुआ अपने फेस के ऊपर or something. This is so natural, so beautiful and so amazing. So this is the finished look guys. Hope you enjoyed this video and please इसको करने के बाद इंस्टा के ऊपर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका फीडबैक कि आप लोगों की लुक्स जो हैं वो कैसी रहीं and wish you a very happy Eid in advance. Thank you so much guys for watching this video and finally I will take your leave and I will see you guys after Eid. So thank you so much guys for watching and finally Allah Hafiz.